how to pitch your big idea. You might be having a great idea, but in order to, go commercial, in order to be commercially successful, you need certain sort of, resources. Generally, for these resources, we have to look out. So whoever will be providing us the resources have to be convinced also that the idea that we have is one of the greatest, right? One of the greatest. Why? Because, until unless you have that belief that this is the best, no one will actually take it as, that. So your conviction matters the most. So this is all that we had already talked about. Now today we'll again be talking about, as I said, the contents, but obviously I'll definitely be giving reference to the one that we have already done. So what is the objective of today's session? To know what is a business pitch, as in what should be the part of it, what should be the content, know how to make a pitch impressive. And how to make a pitch impressive, in this we'll be talking about not only the content, but our own preparation as a personality, right? So basics of, and what are the basics of the impactful pitching? So now from your side, what is it that y'all are expecting? I told you what I am going to do, but what is your expectation from this particular session? Anyone can say. Anything that specifically y'all want to know about as far as the big idea pitching is concerned? Nothing? No one? Okay, let's move on then. So what do you think is important when we are putting across our idea, obviously in front of someone else? What is the most important thing that we should keep in mind? Anyone can give the answer. Is the idea viable or not? Is the idea viable or not? Okay. Yes, of course, that is important. We had talked about it in the last session also, that, the idea needs to be first, structured. When the idea comes to us, no, it's in a raw state. So ideas might be, we might find it a great one, but is that actually a great one or not has to be checked out. And how? By structurizing it. So, it should be given proper flesh, proper skin in order to give it a particular shape. As in case of skeleton. Accordingly, when we talk of a good idea that has come to our mind, we might come across a lots of idea which is not feasible, which is not practically possible. So we need to check, cross-check, recheck, so that we are confirmed that this is going to work. And how will that be done? When we think about the strategies to be followed, the things to be done, whatever is to be done, is that possible to be done? And if it is done, then what can be the outcomes like? Does that outcome match with our expectation or not? Now, these are all those things, that will give you an affirmation that the idea that you have is actually a great one. And whatever the solution comes up, right? Whatever you might be coming up with, is that going to contribute to the society or to a particular segment or to a particular problem that problem is not necessarily the kind of problem that we understand. It can be anything, right? So is it providing a solution, or is it a betterment of the last one? So these things have to be, because until unless there is something good, something creative, something great that is solving a problem which was either unsolved or not properly solved, until unless it is taking care of that,
It cannot be a big idea for people. A big idea is the one which has. Ma'am, your voice is gone. Voice, we can't it? hear you. No, ma'am. You're audible. Okay, probably, ma'am, you have a Yeah. network issue. So, No. but the others are able to hear, right? Yes. Now it's okay. Okay. Might be sometimes it happens, you know. So, what I was talking about is that, you know, your idea should be practical, and because it will bring about a change, so that change will be acceptable. You remember in the last session we were talking about the change which is something that people don't accept very easily. As human, that is human also. Like mostly, you know, we are in a tendency of uh, you know, liking the position that we are in. We generally don't like changes. So whenever a new idea comes in, a big idea comes in, obviously it will lead to a change, and that change will only and only be accepted when we know that it is going to create a difference to our life. So that has to be kept in mind and practically checked. Then only will I be able to convince others. No, because I myself won't be convinced if I go in front of, I mean, if we jump up with, you know, enthusiasm, thinking that, oh, I have come up with a great idea. This is a great one. Now I need to flaunt it to the world. And you go in front of the people who will be giving you the green flag. And when you go there, they ask you a few questions which you are not able to handle. Why? Because you did not prepare it that way, and it's lost, right? So it is very important for you to structurize your idea before you move it to anyone else, right? Okay. What is pitching? I mean, just a quick recap, kind of. The task of bringing an idea to someone with power. Power of what? Of anything that you're looking for. Power to do something for you, anything. It can be a technical support, an administrative support, a financial support. Mostly, you know, what we see is for financial support. So when you have anyone in front of whom you would be sharing your big idea in an expectation of that resource from them, that is what is pitching. So coming up with a good idea is obviously is hard, because it needs a lot of creativity, but more than that, it is more important and, you know, tough to convince others. As I said, we all are happy with whatever we are into. आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर मैम, जरूर. देखिए, मैं ये कह रही थी कि जब आपको कोई अच्छी आइडिया आती है तो क्या होता है कि हम जल्दी से लोगों को बताते हैं, यार मेरे पास तो इतनी अच्छी आइडिया है. बट फिर जब सामने वाले हमसे सवाल करते हैं ना, जिसके लिए हम तैयार नहीं है, तो हमारी आइडियाज को लोग बगल में रख देते हैं, हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करते लोग. तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी हमारे पास कुछ आइडियाज आए तो उनको हम सबसे पहले उनकी जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करें. क्योंकि जब हम पूरी तरीके से कन्विंस्ड होंगे ना कि हमें ये काम ऐसे करना है और ऐसे करके हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, तो ही हम दूसरों को ये बात कन्विंस कर सकते हैं. और हम लोग पिचिंग किसके लिए करते हैं? पिचिंग है क्या? पिचिंग मतलब जब हमारे पास कोई बड़ी सी आइडिया है जिनका हमें लगता है यार इससे तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या इससे कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो जब हम वो आइडिया उन लोगों से शेयर करते हैं जिनसे हमें कोई दूसरी मदद मिलने वाली है, जैसे कि हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए उनसे, तो वो कन्विंस होंगे तभी देंगे ना हमें, नहीं तो क्यों देंगे अपना सपोर्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव, या ज्यादातर लोग पिचिंग करते हैं क्यों? क्योंकि उनको या तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना होता है या फिर पैसे लेने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए. तो उनके प्रोजेक्ट में आप मान लीजिए किसी को पैसे दे भी रहे हो, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पर आप क्या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे जिससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है? आपको पता है ना कि फिर वो आपके पैसे डूबने के पूरे चांसेस रहेंगे. तो आप
तो ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढेंगे जिसमें आपको पक्का रहे कि नहीं यार यहाँ से तो पक्के मेरे पैसे तो वापस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए भी पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सामने वाला आपको आके, मुझे मान लीजिए एक लोन चाहिए, तो मैं जब सामने वाले को कन्विंस करूंगी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना दम है कि वो ये कर सकता है, तभी वो मुझे पैसे देंगे, वरना मुझे नहीं देंगे। तो उसी को पिचिंग कहते हैं, जब हम अपनी बड़ी आइडिया लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो हमारे साथ कन्विंस होके हमारे लिए वो करते हैं जिनके लिए हम उनसे मिले हैं। दैट इज व्हाट इज पिचिंग। सो वही मैं कह रही थी कि अच्छी आइडिया आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए क्रिएटिव ब्रेन की जरूरत होती है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है किसी और को अपने आइडियाज के बारे में बता के उनको कन्विंस करना। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है मैम? बराबर है। ओके ओके। अब इसकी रेलेवेंस क्या है? आप कल्पना कीजिए एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के जिसने अभी अभी एक इनोवेटिव, एकदम कोई नई सोच के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया है और उसको पैसों की जरूरत है। देखिए, अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी सी कोई अच्छी सी चीज इन्वेंट की है जिससे कि शायद लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इन्वेंशन तो उन्होंने कर लिया, उनके पास ब्रेन था, वो तो उन्होंने कर लिया, पर अब उन्होंने जो चीज ढूंढा है वो तो समाज के लिए है, उसको तो बना के उन लोगों तक पहुंचाना भी है ना। पर वो बनाना क्या ऐसे हो जाएगा? उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो जो साइंटिस्ट है उसके पास दिमाग तो बहुत है, पैसे नहीं है, राइट? तो पैसों के लिए और बाकी चीजों के लिए, और वो बेचारा साइंटिस्ट है, उसे बहुत ज्यादा बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का भी उतना ज्ञान नहीं है, उतना पता नहीं है, क्योंकि वो उसने हमेशा ही उस पर फोकस किया है अपने साइंस और साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे। अब उसे अगर अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करना है तो उसे पैसे चाहिए, उसे Shift the whole thing to Hindi, English, please. Yeah, sure. I'll move in both the ways. So suppose, someone, as a scientist, I was just giving an example of a scientist. The scientist comes up, invents a new product, and he wants to commercialize it. He wants to put it to the market. So fine. He can do it, but then, he's a scientist. He is good at knowledge, but, he might not be having enough finance. He might not be having enough money or enough administrative understanding, because when it is to be commercialized, they'll need to administer various things. The operations have to be taken care of, proper management has to be done. For that, they need again help of people, and people will be ready to share or extend their resources with the scientist only when they are convinced that this product is going to do wonders. Right? So the scientist has to convince the person who will be providing him with the finance, has to convince the person who will be providing him with all sorts of administrative help that he is looking for, or any such thing. So this is very very important. Pitching becomes very important. इसीलिए pitching की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये इसी के जरिए जब आप पिच करते, जब आप बताते हैं लोगों को, तो सामने वाले कन्विंस होते हैं, एंड दे प्रोवाइड यू विद, और वो आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करते हैं जिनकी आपको तलाश थी, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट. सो एंटरप्रेन्योर्स कहीं भी उनको दे नीड टू पिच एट वेरियस प्लेसेस. सो कुड बी इन अ पिच विद, आई मीन कई बार आप लोगों में से अभी बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक भी देखा होगा थोड़े दिन पहले, right? So what happens is that, suppose I am a financer and there are lots of people in front of me coming up with their good idea, their big idea, right? Saying that, I mean, they all are looking for finance from me. मेरे से उन सबको पैसों की जरूरत है. तो अब मेरे सामने इतने सारे लोग हैं, मेरी भी तो अपनी एक लिमिटेशन है, मैं कितना तक कर सकती हूँ फाइनेंस. So I'll look for something that will actually be interesting and which I'll find as to be very, very potential as far as, the revenue generation and profits are concerned. तो मैं तो वैसे ही प्रोजेक्ट को ढूंढूंगी, right?
So उसके लिए I need to be convinced, because जिनके पास वो बड़े ideas आए हैं, वो आइडिया अपने जितनी अच्छे से मेरे सामने रख पाएंगे, मैं उतना ज्यादा कन्विंस होने के मेरे चांसेस होंगे, राइट? सो द बेटर way of pitching, the best pitcher will obviously be benefited from the pitching. So sometimes there are investors who are just starting. I mean, there are certain entrepreneurs who are just starting up. They are not started as yet, and they need finance for their seeding, I mean, right from the beginning. Whereas there are certain entrepreneurs who have already started off, now they need the finance to grow. So the stages might be different, but then in any case, sometimes it's not that popular in our country, but across the world there are various such projects in which people have been very, very successful in raising crowdfunding. So what is this crowdfunding? I mean, the entrepreneur convinces the entire crowd. जो entrepreneur है वो पूरी मतलब कहीं बहुत बड़ी crowd है, वहां पे जाके वो अपने आइडियाज शेयर करता है और लोग उससे इतने प्रभावित होते हैं कि सब उसमें पैसे लगाने को रेडी हो जाते हैं. तो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा पैसा लग जाता है और उनका काम तो हो जाता है और बाकी लोगों को भी उससे फायदा होता है. सो ये भी होता है, पर उसके लिए पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Why pitching important? Because it is through your pitch that you convince others, right? So that is why it is very, very important. So how can you make your pitch effective? So a few points to be kept in mind, very clear. This is for every public speaking, lekin still, I'll be talking about a few things that we need to take care of. So start whenever you are starting your pitch. Do not forget to greet the ones who are there. I mean, this is very kiddish thing that I'm saying, but बहुत बार क्या होता है कि आप जब कहीं पिच करने जाते हो, आप इतने नर्वस हो कि आप भूल जाते हो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि आपने अपनी पिच प्रैक्टिस की है, पर आपने ना वो बार बार किसी को विश करना है, ग्रीट करना है, ये भूल जाते हो. जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एटिकेट्स नहीं है, पर आप बहुत नर्वस हो, आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका माइंड फ्रेम ऐसा है. तो इसीलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ये मेंशन करना जरूरी है कि आप प्लीज ग्रीट करना मत भूलिए. इससे क्या होगा कि आप थोड़े ईज आउट हो जाओगे, राइट? आप जब किसी को मुस्कुरा के ग्रीट करते हो, सामने से वापस वो मुस्कुराहट मिलती है ना, तो आपकी घबराहट थोड़ी तो कम हो ही जाती है. दैट इज फॉर श्योर, राइट? आपको लगता है कि अच्छा चलो, now we are at kind of same meter. Then start telling the story of your idea or product. अब आप क्या पूरी कहानी कैसे बताते हैं हम लोग? बहुत सिंपल वे है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्या करने वाला है, उससे क्या क्या होने वाला. एंड बिफोर दैट like before what was the scenario before this product, and what is the difference that your product is going to bring about. So you can tell the stories, and stories are always liked by people. Earlier days we used to have these things, and people faced a lot of problems in this, and then this came up, but then still not solving all the problem, but our product is the one. Now this is how you start your pitching. अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बता के, उसका बैकग्राउंड बता के. सो व्हाट हैपेंस, पीपल आर ऑल इयर्स फॉर यू. आई मीन, वो लोग थोड़े क्यूरियस होते हैं, अच्छा ये होता था, सो नाउ व्हाट इज द चेंज दैट यू आर अबाउट टू ब्रिंग. तो वो दे आर ऑल केयरफुली नाउ लिसनिंग टू यू, और that makes half of your work very easy. So you should have a very clear picture. You remember in the last session I talked about 30 seconds, 5 seconds, 30 seconds and 5 minutes. So 5 seconds वो होता है जिसमें आप one line में बता सकते हो what your project is about, right? So you should have that kind of a clear picture in which you are just able to tell about your product in one sentence. So have a clear picture. Start, as I said, with a simple greeting, catchy tagline. Tagline should be, something which is catchy. सुन के
आप कैसे भी टैगलाइंस यूज कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपका प्रोडक्ट कैसा है आपके उसके हिसाब से आप अपने टैगलाइंस को यूज करोगे। आपने आपने देखा है ना, इसका है ना, आई एम लविंग इट, किसका है, कोई बता सकता है? लविंग इट, आप लोगों ने सबने देखा होगा, थिंक अबाउट इट। Domino's. डोमिनोज, No, McDonald's, I think. It's McDonald's. मैकडीज। McDonald's. Oh yes. Yes. अब देखो, that is the tagline, no? Catchy, loving it. What are you loving? I mean, suppose someone doesn't know, तो उसको लगेगा ना कि क्या है ऐसा। तो वैसे ही टैगलाइंस इसीलिए होते हैं कि जो आपको कैच करे, राइट? तो आप अपने लिए एक टैगलाइन, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक टैगलाइन कर सकते हो डिसाइड, एंड that should be something that will grab people's attention. Keep it short and sweet, as I said. Starting should always be, shortest, if possible 5 seconds. एक सेंटेंस में बोलिए, सामने वाला क्यूरियस हो जाए, क्या? अब आपने सपोज बोला कि my automobile engine that I've invented will slash down the fuel consumption to 1/3. Just that. अब ऑब्वियसली यार सब लोग परेशान है फ्यूल से, तो वो लोग क्या, अच्छा, is that true? How will you do it? So you say, we are going to use this technology. Please describe it in a proper way. Now what happens? You are getting the time, and the people are, again, open to listen to you. They are all listening to you very carefully. Why? Because they are interested in what you said. So you have to catch that interest. You have to create that interest first, grab the attention, and then start speaking about your product. So keep it short and sweet initially. Continue with the description of the problem. Then, once people, they'll ask you now how, and how your idea solves it. You can tell them what are the problems that people are facing these days. We all know that fossil fuel is at the verge of extinction, and at that particular juncture we have come up with a product with an engine which will be consuming, I mean, now you can understand, no? So you started off with talking about the problem, what is the actual problem these days, and from there to your product. So you are giving a connect to it, create a story, a background, right? And everyone loves to do that, I mean, listen to that kind of a condition. So create stories to evoke emotions. I mean, ये इमोशन ही होगा यार, इतना सच में हमारे पैसे भी इतने खर्चते हैं, if only we could have something which would 1/3, आप समझ रहे हो, 2/3 पैसे भी बच रहे हैं आपके, फ्यूल कंजम्पशन इतने कम हो रहे, तो दिमाग फट से जानना चाहता है ये होगा कैसे। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ सुपरफिशियल बातें हैं, तो देन you are ready to listen to them. Okay, so let your audience connect to the idea. एक बार आप वो स्टोरी बताने लगते हैं तो वो उसके साथ जुड़ने लगते हैं, so they get connected to your idea. अब जब वो कनेक्ट होने लगे हैं ना, now is the time when you need to give them something very solid. Now what is that solid thing? That is the statistics, the data that you provide to them, because that will talk about the realistic conditions. ख्याली पुलाव तो बहुत हो सकते हैं, बट जब आप आंकड़ों में किसी चीज को दिखाते हो ना, नंबर्स में दिखाते हो, तो it is, it works like a very, very strong instrument of convincing people. They start believing in you with the data that you have put in over there. So use relevant statistics to impress. Then people will start taking your idea in. बहुत easily वो आपके बातों को नहीं इसके बात में दम है, इतना में इतने कंजम्पशन में इतना पावर होता है, उसकी वजह से हमें इतना सपोज एनर्जी मिलती है, पर ये इतना
ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, धीरे से कंबस्ट होता है, इतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है कि ये इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है। और क्योंकि ये इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है, 3 टाइम्स ज्यादा कर सकता है, ऑब्वियसली हमारा 3 टाइम्स जरूरत कम हो जाएगा। आई मीन अब क्या होगा ना, वो डेटा जब आने लगेगा ना, तो आपको वो चीजें रियलिस्टिक लगने लगेगी, और वो आपके अंदर इट विल स्टार्ट कमिंग इन टू यू इन अ प्रॉपर वे. So you, and then you can use the visuals, no, to make it more impactful. अब ये visuals क्या होते हैं? Like I'm talking to you all right now, but we have all the points put in, no, in front of you, जो मैंने screen share किया है. तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप एक बार उधर देख लेते हो, एक बार मेरी बातों को सुनते हो, तो वो दोनों मिला के ज्यादा impact create करते हैं. Visuals always have a great impact, and makes, you know, listening even more interesting, and you remember it for a long time. किसी चीज को जो आपने देखा है ना, वो आप जल्दी भूलते नहीं हो. सुनी हुई चीजें कई बार हम लोग भूल जाते हैं, पर देखी हुई चीजें बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहती है. तो सुना भी और देखा भी, obviously that will create a greater impact. Use visuals, explain your business model, and then you can go on. एक बार आपने विजुअल्स वगैरह दिखाए, आप अपने बिजनेस मॉडल को दिखाएंगे कि देखिए, दिस इज हाउ आवर बिजनेस विल वर्क, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव. बिकॉज सबको जानना है भाई कि are you actually going to do it, and how are you going to do it? Is that a magic? No, that is realistically done. This is the way that we'll be operating. This is the system that we have chalked out. These are the work that you had to do. No, मैंने पहले सेशन में यही बताया था, ये सब चीजें आपको पहले कर लेनी है. Okay, so you go on to Ma'am, your voice explain is gone. Voice. again. No ma'am. मैम I'm audible हो आप? मैम I think आपका इंटरनेट इशू कुछ होगा. आपका बीच बीच में मैम शायद वो हो जा रहा है. हाँ, नीतम, Ma'am, इंटरनेट की can't वजह से hear. ड्रॉप हो रहा होगा. I said, ma'am, please check मैम your मैं उनको internet. हाँ I'll chat it out मैम. It's okay. You may continue. Okay. So explain, once you have explained your business model, what you are now, that you have to tell. Sometimes I told you, no, that you might be in a project which has already started, जो पहले शुरू हो चुका है. So you are in the initial phases of it. Now for expansion you need the resources. Suppose आप चल चुके हो, आप स्टार्ट कर चुके हो, अब आपको एक्सपैंड करने के लिए चाहिए पैसे. तो आप वहां पे जब आप पिचिंग कर रहे हो, तो आप बताओगे कि हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ, एंड यू नो वेयर आर यू राइट नाउ. अभी आपके ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, अभी आपके टर्नओवर्स क्या हैं, आई मीन जो भी हो, and with what kind of an investment, and what are you looking for, and where do you see it in the, you know, next few years. Your projection again becomes very important. Then, you know, you should introduce your team. ये करने के बाद कि आप कहाँ हो, अभी अभी क्या कर रहे हो, और आप यहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हो. And then, yes, Veena ma'am. Oh, Mamta ma'am, I am asking if suppose I have to pitch in for funding. Okay, where already my work is going on. Just an example saying that my already project is on. Now, in that case, the person who's going to fund me, there has to be a particular amount of, you know, his, what we call it, share with the kind of work that I'm doing. True. That is the way they're going to move ahead when Yes. they put their funds. See, there are various ways. Sometimes they might, you know, in order to help you, they might, you know, they are called like venture capitalists, right? So they sometimes provide capital with an agreement of taking it back in an easy term, so that you can pay them back. That is one way. The other way is when you don't have to pay them back, you just give them a share of your business. So there can be, I mean, this is entirely on the person who is moving about with his or her project, and what is the way that he or she wants to pay it back. So suppose, at this, so sorry, I'll just clarify why I asked you this question, because at this age when we are trying to build up our own business, we don't look into, you know, not so much interested in sharing. So okay. is there any other way out for that? Yes, I told you there are venture capitalists
who are interested in they are not interested in your shares, right? So they are just interested in a good project. Obviously, then, it will be kind of a loan from them, right? Instead of taking it from the bank, you can take it from them, and on their terms and condition, whatever terms and conditions that you might have agreed with, so you can pay them back accordingly. So that is also a possibility. But mostly what happens, because it is a startup, right, and you don't know about the future, so generally what happens, people keeping that safety perspective in mind wants to go in with sharing the ownership. So what happens, they don't have to pay them back, they become a part of the business, and as and when they are profitable, it is shared in that particular way. So it's like that. Okay. So it entirely depends upon what you want to do, right? All right. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Okay, so that is why you have to tell them, see, as it is with this kind of an investment that I had already done last year or last to last year, I am now able to generate this revenue. I see a very big gap in the market and I want to capture that market, and for that I need to expand, and for which I need funds. If we have this much of funds, so this is the projected profits that we'll be getting in the forthcoming years. So that has to be very, very clearly put. I'll be showing it in the decks also, like I'll talk about what are the very, very important decks that you should have. So वो जब मैं बताऊंगी तो भी मैं बताऊंगी, और अभी भी बता रही हूँ कि ये आपको बताना जरूरी है. फिर आप अपनी टीम से मिलवाते हो कि ये जो आपकी टीम है, ये टीम ऐसी क्यों, ये कौन कौन लोग हैं, and why they are the best people to be on that board. So you have to introduce your team, because that creates an impression. Okay, these people are of such caliber, so obviously they'll do well in order to take this business to the next level. So introduce your team, ask for realistic. Now when you are looking for the fund, suppose, so it should be very, very calculated. One means you should have done your homework in the best way. You can never ever afford to take more than what is required. I tell you why, that also I'll tell you. And neither can you ask for something which is less than what is required. Why? Again, I'll tell you. See, whatever money or fund that you take from anyone, that money is to be used in the business in such a way that it generates revenue for you, right? So if your calculations are done in a proper way, so then whatever money you will be acquiring, whatever money or fund you will be getting. Yes, someone was saying something. So whatever money you will be getting, you will be investing it in various phases, in various parts of the business to generate revenue. Now suppose you ask for more than what is required. आपको लग रहा है यार ज्यादा लेके रख लेते हैं, क्या पता कल को. अब जो आपने ज्यादा लिया है उसको तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, उसकी जरूरत नहीं थी, तो आपने लिया है, वो रखा हुआ है, आपने एक्स्ट्रा लेके रखा है. अब जो आपने एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ वो आइडल पड़ा हुआ है, इट इज जस्ट केप्ट आइडल, it is not earning anything for you. The rest of the money that you have put in the business will generate revenues for you. उसी पैसे में से आप जो भी आप कमा रहे हो उसमें से आप पे बैक कर सकते हो. बट जो पैसे आइडल पड़े हैं उसके ऊपर, उसने तो कुछ कमाया ही नहीं, पर फिर भी आपको उसके ऊपर एक कॉस्ट देना पड़ रहा है. Tell me how justified is it? It is a kind of unnecessary expense which will later on prove to be a big loss, right? So that is why you cannot afford to have more than what is required, and less will obviously obstruct your work, so that is also not afforded. So you have to be very, very realistic with your calculation. So you have to ask for the realistic amount. So ask for realistic, and when everything is done, do not forget to thank them, whether you get it or not, but don't forget to do this, right? Okay, so these are the ways that you make your pitch effective in. Now अब अंदर की बातें करते हैं. ये तो हुआ कि आप क्या क्या करेंगे.
अब हम बात करेंगे कि what should be and how should your pitch be created. So while you are creating your pitch, जब आप लिख रहे हो, अपने words को very carefully choose your words very carefully. Why do I say so? I remember in the last class we had Linda ma'am. So she said that she has a project in which she teaches kids. So she said that, I asked her, suppose you have to pitch it to, the parents. So what will you do? So she said, I think she started off like that. I think that your kids will be benefited. I said, don't give them that chance. You think it, they might not think it that way. So you should be very, sure about what you are saying. There should be, no such word in your pitch which would either talk about your not being sure or which would suggest that, it might not go that way sometimes. ये भी नहीं. It should be full of conviction. वहां पे पूरा विश्वास होना चाहिए. So instead of saying that, I told her, you should say, if you want to bring about, if, remove that if. Your kid can develop into a great professional, just send her to me. Done that. I mean, what are you doing? You are, kind of putting it across to her, to the mother, in such a way where you are saying that this will definitely happen, and that is what they are looking for, right? So you should be very choosy in, selecting your words. So be very careful about it. The second thing, practice. Nothing less than perfection will work over there. Nothing less than that. Take my words. Q. I'll tell you that also. See what happens. The more you pitch in front of various people, you can start pitching in front of your siblings, your friends. They are not the ones who will be helping you. But then when you start pitching in front of them, everyone have their own, way of looking into things. So they'll definitely let you know what are the flaws or what are the lacunas in your pitch, which you might have, sometimes skipped. It might have slipped off your mind. And sometimes we are so obsessed with what we are doing that we are not able to see the flaws. We are not able to see the gaps, right? तो कभी-कभी हमें अपने प्रोजेक्ट्स का इतना वो होता है ना, होता है, अरे हमारा आइडिया तो, इससे अच्छी आइडिया तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है. ये चीज जो हमारे दिमाग में बैठा है, तो हमें हमारी कमी देखने ही नहीं देता है वो. So that is the reason why you should practice. When you do it in front of various people, who can give you very honest feedback. So they'll tell you what was lagging in it, and then you can again, whatever was lagging, you will make it even better. Now you will remove that lag. You will try and put in those points there. So it slowly becomes almost perfect. See, perfection is a state, I know, but then almost perfection can always be achieved, right? So, yes, please practice a lot, because sometimes it might so happen that you might not get a chance to practice. You have to all of a sudden pitch it in front of someone. Suppose you are looking for funds from a person, meeting whom is not possible. I mean, you tried a lot to meet that person, but you couldn't. You're not getting the appointment. One day, all of a sudden, when you were going to his office again, you find him in the same elevator where you are also. I mean, you also went in and he was also there. So you tell him, I've been looking for you. I've been asking for your appointment for a long time, sir. Can I? And he might tell you, "Theek hai, now it's 20th floor. So till then you have time. You can pitch. You can tell me." Now you should be prepared. आप पहले से prepared हो. वो one liner, वो 5 seconds.
जो मैंने पहले बोला था, वो 5 सेकेंड्स में अगर आप प्रिपेयर्ड हो, प्रैक्टिस्ड हैं, सो यू कैन स्टार्ट इट देन एंड देयर. जब तक एलिवेटर वहां तक पहुंचेगा तो उसने आपको 30 सेकेंड्स भी दे दिया होगा. 5 सेकेंड्स सुन लिया, अच्छा इंटरेस्टिंग, टेल मी हाउ. आपने जैसे वो 30 सेकेंड्स दिए ना, वो बोलते कि मैम डू वन थिंग, I'll just tell my secretary, she'll be giving you an appointment in the next 10-15 minutes. अब आप सोचो, I mean that was only possible because you had already practiced. Otherwise, it wouldn't be possible. Sometimes, while someone is on a dinner, a lunch, so you get that time to pitch in then only. So be prepared anytime. आपकी प्रोजेक्ट है, आपसे अच्छा कौन जानता होगा, आपकी आइडिया है. Who else will know it better than you? So when you have practiced with all its aspects in a proper way, there's no reason why people won't be convinced with you. And whenever you get a chance, you should be able to deliver then and there, right? So I don't say this will happen all the time, but you should be prepared for such a condition all the time, right? Okay. So create an impressive pitch deck. Now this will not happen in the elevator. वहां पे आप obviously PPT नहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे, वहां तो आप जुबान से ही बोलेंगे. पर जब आप फॉर्मली कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो आपको डेक्स की, स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, राइट? सो वो स्लाइड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे ग्रैब द अटेंशन. So it plays a very, very significant role in a formal pitching. Whenever someone is pitching, when it is there on the back, the big screen there, and then, the person speaking, it creates a great impact. So what are the essential slides, essential decks that you should be having in your pitch is very, very important. तो मैं अभी जो बताऊंगी ना, वो सारे स्लाइड्स के बारे में कि जो आपके पिच में होने चाहिए, राइट? जिनको आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते. वो सारी उतनी स्लाइड्स तो होनी चाहिए. उसके बाद आपको जो भी ऐड करना आप कर लो, बट एटलीस्ट उतने स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में होने ही चाहिए. सो दैट, आई मीन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स that we are going to talk about. All that is essential in a deck. So the 11 decks that I am going to talk about are the soul of your pitch. वो आत्मा है उसकी, उसके बिना वो उस इम्पैक्ट को क्रिएट ही नहीं करेगा, वो जीवन उसके अंदर आएगा ही नहीं. That life will not come to it. So that is very important, right? So please keep it intact. So the first one is vision and value. I mean, क्यों कर रहे हो आप क्यों, I mean, what is your vision about that particular business? A quick one sentence overview of your business. What is it going to do? What kind of a value is it going to create to the society, to the customers, to the targets, right? That vision and value is very, very important. That is that one liner that I was talking about. So you have that vision. And मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, बार बार बोल रही हूँ कि अगर कोई बोलता है यार मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, ये एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो अपने बिजनेस के बारे में वो बिल्कुल क्लियर नहीं है. जितना भी बड़ा बिजनेस हो आप उसको एक लाइन में बता ही सकते हो इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बिलीफ इन योर विजन. ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Okay, then the second slide should have the problem. जिस problem का ये solution है आपका product, तो उसके बारे में talk about the problem you are going to solve with your product. So talk about it. Who has the problem? किसको किसको ये problem हो सकती है, कहाँ कहाँ इस तरह के problems देखे जाते हैं, and then you can tell a story कि एक बार मैं वहां गई थी, या किसी ने, मेरे एक फ्रेंड ने ये बताया कि दिस हैपेंड विद हिम एंड हर एंड दिस वुडंट हैव हैपेंड अगर अब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा ऑब्वियसली. तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए. वो जो प्रॉब्लम सचमुच का प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है, कुछ गैप्स यार, इट वाज रियली डिफिकल्ट वंस आई needed say this 5 liter of olive oil, but the container was such that I was not able to carry it, and it was very important for me to take it. Now, what you are talking about, a good container which would be very easily
transported from one place to other. तो उसके हैंडल्स हो, उसका वो, सपोज आपका ये प्रोडक्ट है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई. That is why it came to my mind, what if I had this kind of a product? Now, I mean, you can understand, no, you told something that others also might have come across, no, that kind of a problem others might also have come across. तो उनको लगे यार सच में ये तो मेरे साथ भी हुआ था. So then they'll be, very, very interested in knowing, अच्छा तो इसका solution क्या है, and how is it going to solve the other type of problems. Like इस तरह की चीजें ऐसे ही बोलनी चाहिए ताकि they all, get into it. जब हम किसी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो कन्विंस करना becomes really easy, right? Okay. So then talk about the target market and what are the opportunities, because you are talking to the people who will be funding. तो उनको तो देखना है ना भाई कि उनके पैसे वापस आएंगे कैसे, आप चुकाओगे कैसे, आप चुका भी पाओगे कि नहीं, राइट? एक तो वो, दूसरा अगर उन्होंने शेयर्स भी लिया है तो जब उन्हें दिखेगा कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल्स हैं, तभी वो आपके बिजनेस में शेयर्स भी देखना लेना चाहेंगे, वरना क्यों लेंगे भाई, उनको तो दिख ही नहीं रहा ना आपके बिजनेस में कोई फायदा. तो दोनों ही केसेस में अगर उन्होंने आपको लोन भी दिया तो भी वो ये देखना तो जरूर चाहेंगे कि आपके पास पैसे तो आएंगे ना जिससे आप उनको पैसे वापस कर सको. So this is very important. So you have to talk about what is the target market. आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, यंगस्टर्स को कर रहे हो, एडल्ट्स को कर रहे हो, ओल्डर एडल्ट्स को कर रहे हो, सीनियर सिटीजन्स को कर रहे हो, किड्स को कर रहे हो, एलिट ग्रुप को कर रहे हो, मिडिल इनकम ग्रुप को कर रहे हो. मतलब आपकी जो मार्केट सेगमेंट है उसके बारे में आपकी पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए. whom are you going to cater to, right? So that should be very, very clear. So who your ideal customer is, how many of them are there presently. अगर your project has already started, आप काम पहले से कर रहे हो, तो अभी आपके पास कितने उस तरह के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं, जो कस्टमर्स बन चुके हैं वो कस्टमर्स कितने हैं, एंड व्हाट इज द पोटेंशियलिटी लाइक, और कितना आपको लगता है कि आप अगर आपके फंड्स दे दिए जाए, आप उस पर काम करना शुरू करो. सो व्हाट इज द नंबर और एन एक्सपेक्टेशन दैट यू आर गोइंग टू सीज, उसके बाद आप कितना कैप्चर कर पाओगे. सो व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज, वो उस चीज का मार्केट साइज क्या है. हाउ डू यू पोजिशन योर सेल्फ, आप अपने आप को उस मार्केट को देखते हुए कि इंडिया में इतने 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 करोड़ का मार्केट है ये, अच्छा ठीक है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप किस पोजीशन पे देखते हो इस चीज के लिए. सो ये सारी चीजें ना, मतलब ये एकदम आपकी क्लियर पिक्चर को बताएंगी कि व्हाट आर यू टारगेटिंग एट, वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर डू यू वांट टू see yourself in various time span, like 2 years, 3 years, 5 years span of time. So what are you going to do, what will be your position like, will you be a leader, will you keep on being the leader later also, and for that what are your visions. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, right? And then आपने प्रॉब्लम की बात कर ली, किसको किसको ये प्रॉब्लम होती है, जिसको प्रॉब्लम होती है वही तो आपका टारगेट मार्केट है ना. सो प्रॉब्लम की बात की आपने, अपने टारगेट मार्केट की बात की, वहां पे कितने गैप्स हैं, कितने लोग अभी भी इस चीज को नहीं पा रहे, तो वो गैप्स है, और जो गैप्स है वही आपकी अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो इन सब की बात करने के बाद नाउ यू कम इनटू योर प्रोडक्ट. नाउ यू हैव अ प्रोडक्ट which will solve the problem of all these people, right? And how a classic storytelling where you can build up the problem. मैंने पहले बताया, पहले build up कीजिए and then describe how there are lots of, might be there, either there were no solutions, or even if there were, they were lesser impactful, उतने efficient नहीं हैं. So yours one is a wonderful thing which will create a great difference. तो आपको इस तरीके से क्लासिक स्टोरी की तरह उसको पूरा बिल्डअप करके सुनाना होता है, राइट? तो आप समझ गए ना, अभी तक हम लोगों ने कितने डेक्स की बात कर ली थी, 4 डेक्स की बात कर ली है. अब विल टॉक अबाउट वो उसके अंदर फिर है, आप बताओगे आप कहाँ देखते हो. मैंने बताया ना कि आपने करना है, तो रेवेन्यू कितनी होगी, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि ये पैसे कैसे कमाएगा,
ये बिजनेस जो है ये पैसे कैसे कमाएगा, क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि आपको ये पैसे कैसे लाने हैं, तो you will talk about that business model, right? What will be the expected revenue like in the first year, the second year? When are you going to get your break even? आपका break even कब हो जाएगा? आपका इतना इन्वेस्टमेंट के बाद वो पार्ट कब आएगा जब आपकी सारी इन्वेस्टमेंट और जो आपकी रेवेन्यू है वो बराबर हो जाएगी? आई मीन ये सारी चीजें प्रोजेक्ट करना होता है. दीज आर द फिगर्स. जो मैंने फिगर्स की बात की थी ना कि स्टैटिस्टिक्स डालिए, डेटा डालिए, फिगर्स डालिए, ये वो सारे डेटा हैं जो कि लोगों को कन्विंस करते हैं. दिस इज व्हाट कन्विंसेस द people with the power to give you a green flag that the business holds good, right? So please put it there. Kai bar if you are not very comfortable with it, fine, you can take the help of, you know, someone who is good at accounts, someone who is you know, good at numbers. unki madad le sakte ho aap. Then traction and validation roadmap. अब ये traction and validation क्या हो रहा है? If you already have sales or you know you have those people who are early adopters, right? आपके product को उन्होंने बहुत early stage में ही adopt कर लिया है, तो अब आपको पता है कि ये लोग use कर रहे हैं, they are very happy with your product, suppose. So investors wants to see that you have proven yourself. आपने आपका जो dream, you know, product hai, the great idea that you have is actually a great one. Because with even this, you know, starting phase where you might not have started off very big, you are actually, you know, getting something which is big. So अब अगर इस पे सचमुच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली किया जाए, so it will definitely create a bigger impact. तो ये चीज वैलिडेट करना, आप अपने जब अभी की स्टेट बताते हो ना, इतने पैसे डाल के हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने ये किया और फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो people start believing in you. You are kind of validating whatever you have said. आप अपनी बातों को वैलिडेट कर रहे होते हो, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यही सारी चीजें तो सामने वाले को जीतेगी ना, इनकी मदद से तो आप उनके विश्वास को हासिल करोगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन टेल देम कि अब वो रेवेन्यू आपने तो सोच लिया, अब सामने वाला बोलेगा भैया या बहन इतनी बड़ी जो आप रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव इट, हाउ विल यू डू इट? So obviously that will happen with a proper strategy of marketing and sales. So what are the ways that you know, the differentiated way in which you are going to cater to the market? Marketing की आपकी strategies क्या होंगी? What will be your sales strategy like? So how you are planning to get the customer is what they want to know. उनके attention को कैसे seek करोगे? And you know, what will be your sales process like? How will you make it convenient for the people so that you know you get even more sales? So ये पूरी strategy you have to discuss. I mean, not in great details, but at least you know the superficial one should say कि at least yes, this seems to be working. लगना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट, ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोगों ने अडॉप्ट की तो इससे कस्टमर्स तो भैया आएंगे, ये तो दिख रहा है, तो आपकी प्रोजेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट? ओके, देन आई टोल्ड यू नो द टीम. व्हाई आर यू एंड योर टीम द बेस्ट एंड द राइट पीपल टू बी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? व्हाई आर यू द बेस्ट टीम टू टेक दिस प्रोजेक्ट अहेड? अब आप बताओगे कि ये बंदे का इस चीज में इतना एक्सपीरियंस है, जिसने ये कर दिखाया है पहले भी. So we have him on our board and we are definitely going to take it there. I am so and so, this person is so and has got this. तो सामने वाले को लगता है यार the project is in safe hands. देखिए आप कैसे कैसे हर लेवल पे you are going on making people even more convinced about your project. तो वो आप अपने yes. I'm sorry to interrupt, but time up हो गया है. अच्छा, just 2-3 minutes more. Okay. So then I told you about the financials. आपको दिखाना है आपके sales forecast क्या है,
इनकम स्टेटमेंट्स वो जो फ्यूचर वाली है क्या होंगी, राइट? आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले साल कितना आपका प्रॉफिट होगा, उसके बाद कितना होगा, और वो पूरा कैलकुलेटेड वे में कितना इन्वेस्ट करेंगे, इतनी प्रोडक्शन होगी, इतना सेल्स होगा, पर यूनिट इतना होगा, एंड इससे हमारी ये रेवेन्यू आएगी, इसमें से ये खर्चे काट के इतना टैक्स देके हमारे पास ये बचने वाला है। इस तरह का आप प्रोजेक्ट करते हो। हाँ, 3 साल एटलीस्ट मांगते हैं, तो ये 3 साल आप डालोगे वहां पे। एंड देन आपको बताना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, या एकदम नया प्रोजेक्ट है तो कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि जब एक तरह की प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी आते हैं। सो यू हैव टू प्रोजेक्ट दैट एज वेल, राइट? ओके, एंड देन whatever investment you will be getting, how are you planning to use it? Now these are the slides that you can never ever ignore to forget. I mean, sorry, you can never ignore, kind of. So you cannot forget to put these 11 slides in your deck. So, and if you have prepared it that way, you are there now, you are ready to pitch. Go ahead, and all the best.